तो कहाँ हमको एक्शन लेना है? So your entire strategy can be based on if you think that this attrition rate is very high. अच्छा बताओ 13.3% good attrition or bad attrition? Is it healthy or unhealthy? हेल्दी मतलब चलेगा इतना, 4,000 में 400-500 लोग छोड़ के जाएंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए, इतना तो जाना ही चाहिए लोग। Sir, unhealthy. हेल्दी कितना हेल्दी होगा तो चलेगा? 4 to 5%. Yes, 5 around 4 to 5% चलेगा, 4,000 में से 200 लोग छोड़ के जाएंगे तो चलेगा। No, sir. Then 2%, around 2 to 3%. As such, there is nothing specific, but yes, as less as possible. 1-2% is okay. That is an healthy attrition. इतना churning रहना चाहिए, थोड़ा बहुत लोग जाएंगे आएंगे तो then there will be new things coming in. Again, इसमें in this data set अभी ये जो हम देख रहे हैं ना, 177 people left for want of better career options or professional growth. So one thing that can imply is that my company does not provide adequate opportunity for growth. Okay. अगर हम further इसको analyze करेंगे, so you may find जो लोग छोड़ के गए वो कितना टाइम आपके साथ रहे? Length of service is another important area that can give you some insight. Yes or no? Yes, sir. If you see, many employees have left below 1 year. So out of 172, 113 employees have resigned within 1 year. Good sign or bad sign? Bad sign. Bad sign. So what's wrong? कहाँ problem है? Since they are not seeing any growth opportunities, so they're not willing to stay for a longer time with the organization. Within 3 months, they decided that there is not enough growth. Yes, sir. Orientation and onboarding also. Correct. They might. Correct.
So see, all these are assumptions. Okay, but these assumptions comes from the data, right? So out of 177, 113 people, if they left within 1 year, तो इतने सब सियाने तो है नहीं, सबको पता चल जाएगा कि यार 3 महीने में इस कंपनी में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, और इतने 113 लोग, ह्यूज नंबर. There are other 33 people in the same category, career change. है ना? So similar kind of reason, if not the same. Now, if you dissect this way your entire data, there are various implications are there, ना, various inferences are there. तो जब हमने फर्स्ट लेवल में इसको एनालाइज किया, what we got is 177 people have left the organization because of better career options या professional growth. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट assumption कि भाई अपने में यहाँ ग्रोथ नहीं है, करियर में ज्यादा प्रोस्पेरिटी का प्रोबेबिलिटी नहीं है. ओके, हो सकता है. बट देन इफ वी गो ऑन द लॉन्जेटिविटी, आउट ऑफ 177 कितना परसेंट हुआ है? 177 में 113, हाउ मेनी परसेंट, व्हाट इज द परसेंटेज? कितना? 63.84%. So more than 60% of employees left within 1 year of the joining. है ना? This is another matrix. Now 63% within 1 year is a very high iteration, very high. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगले 2 महीने में जो मैं 700 लोग हायर करने वाला हूं, है ना, अगले 2 महीने में जो 700 लोग हायर करने वाला हूं, उसमें से भी 63% लोगों के जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है. यस और नो? समझ में आ रहा है? Yes. है ना? मतलब मेरा जो लेटरल हायरिंग का मेथड है या मेरा जो हायरिंग मेथड है, उसमें कहीं ना कहीं मुझको फाइन ट्यून करने का जरूरत है. नंबर 1. नंबर 2, जो जिन लोगों को मैं हायर कर रहा हूं उनके साथ में मेरा कम्युनिकेशन फीडबैक चैनल इस्टेब्लिश नहीं है. राइट? अपूर्वा सेड सिमिलर थिंग्स, that they are not oriented properly. So probably they don't know that how the career progression is there in this organization, to what level one can go, how much time will it take to reach to that level, right? So number 1 is my hiring methodology. Perhaps I need to rework. Number 2, those who have joined me, their onboarding and feedback mechanism is not proper. They have not been oriented properly. तो 2 एरिया मिला, 2 areas of improvement, है ना? अगर ये आप एनालिटिक यूज नहीं करेंगे, if you won't analyze these data, what will happen? You may assume that it is just 13% people leaving. So मुझे हर साल 13% के हिसाब से आदमी बढ़ाना पड़ेगा, है ना? If you are not analyzing this thing, तो हर साल 500 लोग छोड़ के जाता है तो मैं 700 हायर करूंगा, 500 जाएगा, 200 तो फिर भी रहेगा ना. बट इंपॉर्टेंट इज कि मैं कौन से 500 हायर करूं. जब मैं हायर करूंगा तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? एनी अदर डायमेंशन इज पॉसिबल? Looking to this data, anything else that you can think about?
देवियों, क्या नहीं? 5 किलो में से 4 किलो चीनी घर में कम हो गया, क्या क्या सवाल दिमाग में आएगा? Maybe we can see. सॉरी, सर चीनी कम मीठी है या ज्यादा? ओके, तो क्वालिटी ऑफ शुगर, डिपार्टमेंट। ओके, व्हाट एल्स? प्रेरणा, यू वर सेइंग समथिंग? I was saying that if they are leaving, they must be going to, various kind of organizations. So we can see what competitor is doing. Like maybe it is within at our organization. Okay. Now this is a consulting firm. Okay. So कहाँ कहाँ गए होंगे ये पता करना थोड़ा मुश्किल है ना. If it is a manufacturing industry or industry type is very constant, so yes, to some extent you may know कि भाई मेरा कंप्यूटर क्या कर रहा होगा. मतलब अगर कोई वोडाफोन में काम कर रहा है तो वोडाफोन से छोड़ के कहाँ जाएगा? आइडिया में जाएगा, एयरटेल में जाएगा, जियो में जाएगा, 4-5 कंपनी में जा सकता है ना. सो व्हाट दे आर डूइंग परहैप्स officially or unofficially, you may try to find out. Can be one of the methodology. Okay. बट 5 किलो में से 4 किलो चीनी अगर कम हो गया तो क्या क्या सवाल आएगा? चीनी कितनी ज्यादा कम मीठी थी? चलो एक. दूसरा, अरे ये तो घर से जुड़ा सवाल है. खाना वाना बनाते हो नहीं? सर नहीं. हमारा कंजम्पशन ज्यादा है. क्यों? कम खाया करो. ज्यादा खा रहे हैं. नहीं, कंजम्पशन ज्यादा है वो तो रिजल्ट है, बट क्यों ज्यादा है इसके पीछे क्या क्वेश्चन आएगा? तो जैसा गर्विदा ने बताया कि साहब हो सकता है कि वो चीनी अगर उसका स्वीटनेस कम है तो ज्यादा कंज्यूम होगा. दैट कैन बी वन रीजन. व्हाट एल्स? सर हमें मीठा बहुत पसंद है. हमें मीठा बहुत पसंद है. ओके, बट ये एबनॉर्मल कंजम्पशन है ना. मतलब हर महीने ऐसा नहीं होता है. दिस इज एन एबनॉर्मल कंजम्पशन. सर किस कंपनी की है? ओके, किस कंपनी की है उससे कैसे पता चलेगा कि भाई उससे क्या फर्क पड़ेगा कंजम्पशन ज्यादा कम होने में? मतलब वही बात हो गई ना, मीठा ज्यादा अच्छी कंपनी होगी, ज्यादा फांकोगे सर. नहीं सर, वो मीठा ज्यादा कम. Correct. So what is how sweet it is? That is one thing. What else? सर घर पे गेस्ट आ गए. हाँ, वेरी गुड. इस महीने कोई मेहमान तो नहीं आए घर पे? हाँ, चाचा जी आए थे, 15 दिन रुके थे, उनको मीठे घोष हो. ओके, कैन बी वन इन्फरेंस. What else? Vanshika there? Yes, sir, I'm actually cooking. तो ठीक है, आंख बंद करके. No sir, वीडियो बंद करते हैं. हाँ मतलब वही. Yes sir. हाँ भी बोल रही हूँ. Sir, there might be one more reason कि फेस्टिवल मतलब फेस्टिवल वाला मंथ है तो ज्यादा करेक्ट. ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा फेस्टिवल ऐसा कुछ था जहाँ पे आपको मिठाई ज्यादा बनाना पड़ा, है ना? या ऐसा क्या क्या इस महीने हमने जो बनाया जिसमें हमको शुगर का कंजम्पशन ज्यादा हुआ? यस, है ना? So sugar is an example for that. But anything, if it is consumed abnormally,
So then all these questions should come to your mind. Na? That is what analytics is. And then what you do, then you start figuring out. अच्छा 3 महीने पहले भी ऐसा ही हुआ था, चाचा जी आए थे, उस महीने भी चक्कर ज्यादा लगी थी. यस. और हर दूसरे तीसरे महीने में जब भी त्योहार होता है, होली, दिवाली, तीज, तो उन महीनों में शक्कर का कंजम्पशन ज्यादा होता है. यस और नो? If these questions are not coming to your mind, then train your mind in such a way that all these questions must come to your mind. Right? Now again, so coming back to this data, what other thing comes to your mind? What else you would wish to check? एक हमने रीजन देखा, सेकंड हमने उनका एरिया, लेंथ ऑफ सर्विस देखा, लॉन्जिविटी. दूसरा क्या चेक कर सकते हैं? Sir, some external factors might also play a role. For example, एक और कोई कंपनी आ गई या फिर एक और कोई फर्म आ गया जहाँ पे लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जा रही है. No assumptions. From this data, what else you can try to find out? और क्या क्या एरिया आप देख सकते हो? Yeah, you wish to check. Which designation of employee are leaving? Perfect. Perfect. What level of employees are leaving? है ना? So, if we see the designation, okay, let us change this and sorry, let's change this. Instead of reason, now if you see, those in associate category, attrition is very high in that designation. है ना? So you further narrow it down to looking to that 513 as a whole or a sum total. We say that let us see why. So I got the reason. Okay, then this is the reason. Now because of this reason, किसको सबसे ज्यादा तकलीफ है? Who is the maximum aggrieved person? Associates are maximum aggrieved person. 224 associates have left. Okay. अभी 6 डायरेक्टर भी है, उनको क्या बेटर चॉइस चाहिए भाई? है ना? But then it, as of now, if you talk about number, forget about the criticality, number, then associate is the area to be focused. है ना? Yes or no? Yes. Okay. So are you understanding the concept? है ना? कैसे करना है, क्या करना है, एप्लीकेशन एक्सेल वेक्सेल हो तो बाद में भी सीख सकते हैं. But important is to develop those thoughts. So being an HR lead, how will you make the strategy? है ना? Or what countermeasures will you take? So now I know that my associates are leaving more on account of better career options or choices, which means when I'm onboarding an associate,
I need to be very careful about all these things, and I'll have to inform them in advance, right? Or you will have to have a proper communication channel, at least for associates. Yes or no? Agree, disagree? Agree, sir. समझ में आ रहा है? Okay. और क्या हो सकता है? So you got reason, you got length of service, you got department. What else? Location maybe. Location is there. I mean city. City is there. City is there. Also, sir, in case we are hiring freshers, so we can look that what kind of colleges are we, like, what, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा छोड़ रहे हैं एक particular college के, तो ये भी देख सकते हैं. Not just college as in particular, for example, अगर बड़े-बड़े institutes से कर रहे हैं, तो वो maybe they are more, मतलब वो छोड़ने का उनका probability ज़्यादा है. ऐसा कुछ. हो सकता है, हो सकता है, बट कॉलेज का नाम तो यहाँ लिखा नहीं है ना? So with available data set, what we can do? So what Prerna said is that city is another area that we can think about it. Now, what is happening? What is happening is we are trying to concentrate our efforts. 513 को रोक लें तो पॉसिबल है ना, बट कहां पहले जाएं, पहले किधर फोकस करना है? सो वी सेड दैट पहले ऐसे लोगों को फोकस करना है जो रिसेंट हायर है. ओके, अच्छा, ये रिसेंट हायर किस लेवल पे है? एसोसिएट्स. वेरी गुड. कहां ज्यादा गड़बड़ है? तो बैंगलोर में ज्यादा गड़बड़. सो इफ आई फोकस Bangalore's associate, I can maybe 50% of my career का जो ऑप्शन है उसको मैनेज कर सकते हैं. नाउ what could be the challenges? That can be next question, है ना? बैंगलोर में क्यों ज्यादा? बैंगलोर में क्यों ज्यादा? बैंगलोर में कंपटीशन ज्यादा है, ऑप्शंस ज्यादा अवेलेबल हैं, है ना? Therefore, the attrition is high. Now, how to counter? Then you can think about कि भाई इसके जैसी कौन सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे ये लोग जा सकते हैं, या मैं अपने कंपनसेशन पैकेज में क्या इंप्लीमेंट करूं, कम्युनिकेशन चैनल कैसे करूं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं. Yes or no? You know, there is one more factor. That factor is gender. So associate female 72. है ना? So if you drill it down like this, somewhere you will have some numbers which will be more concentrated. Okay. So out of total separation, female number is less, male is more. Yeah. Yes or no? So one strategy can work out that we should hire more female employees.
because their attrition is less. तो ऐसे ही हर इंसान किसको भी लेके हायर कर लो एंड देन छोड़ के चला जाए. आर यू गेटिंग मी? पक्का ना? Yes. So this is how it all can be derived, right? You have this data set. I have shared two Excel files. I've shared two Excel files in the group. Download both the files. Okay. And from those files, try to get inferences. मतलब वो डेटा देख के आपको क्या समझ में आता है, राइट? जैसे ये डेटा देख के हमको समझ में 513 लोगों ने छोड़ दिया. अच्छा, और हम क्या चेक कर सकते हैं? तो हम जेंडर पे चेक कर सकते हैं, हम एज पे चेक कर सकते हैं, हम क्वालिफिकेशन पे चेक कर सकते हैं, हम लोकेशन पे चेक कर सकते हैं, हम लॉन्जिविटी पे चेक कर सकते हैं, राइट? सो if you go through each column, something will come to your mind. Note it down. Okay, how to do, what application to be used are secondary things, but what all questions comes to your mind looking to this data, that is important. है ना? So by any chance, do you get an opportunity to access your laptops and desktops, or it is throughout mobile phones? We do use laptops. Okay, Yes, okay. sir. So if you are using any such thing, it will be easy for you to look at the data in totality, because mobile में तो छोटा छोटा दिखेगा. Mobile is good for movies and reels, not for Excel sheets. अगर कहीं दिमाग लगाने का काम है तो मोबाइल में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, right? So try to explore these two sheets, these two files, okay? And then share whatever you understand from this. I'm not asking you to learn the formulas and functions, everything as of now, but at least have that inclination or mindset towards understanding the data and trying to get what all informations I can get from this data. So it can be a statement, it can be a question, anything, but I want all of you to work on these files, and whatever you understand on this file, make a note, maybe a single presentation, single slide, Excel, Word, anywhere, wherever, or in the notebook also. Perhaps your handwriting are good and it is legible. Okay. And then we will see in the next subsequent class what you understood from this, right? Meanwhile, I'll share a couple of more data sets for your practice. Okay. But then there are two things important which you all must remember, that analytics is not only finance or marketing, it is equally important for HR. And the more analytical you will be, it will help you to take decisions based on numbers. Okay. So that is from my side for the day. If you all have a question, please let me know. I am not sure for tomorrow's class because ma'am is not available. And I also might not be available tomorrow. So in that case, I'll bother you on Monday evening around same time. मुंह मत बिगाड़ो अपूर्व, ऐसा हर मंडे नहीं करो. I know it is tiring, 9 से 10 थोड़ा सा मुश्किल है, but please bear with me for 1 or 2 days, है ना? But then otherwise I am available on
WhatsApp. So any query, any concern, you can always come back to me, right? कोई सवाल नहीं ना? होगा तो भी कौन पूछे रात को 10 बजे? आप भी सो, हमको भी सोने दो, है ना? Fine, then let's conclude. Sir, thank you. Good night. Good night. कितनी खुश हो गई है पूर्वा? Thank you, sir. Good night. Good night. Thank you, sir. Okay. Bye bye.